On to our top focus at this hour. Viewers, a major political scandal has rocked the Congress party in Haryana, where Gaurav Kumar, the husband of Haryana Mahila Congress General Secretary Suchitra Devi, alleges that he paid crores to Congress leaders to secure a ticket for his wife in Haryana's 2024 assembly elections. Kumar has also claimed that personal assistants of Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi visited his house to collect lakhs of rupees. In an open challenge to Rahul Gandhi, Gaurav Kumar has claimed that he is ready to expose the names of several Congress leaders who allegedly took cash in exchange for a ticket. His allegations do not end there. Mr. Gaurav Kumar, who has been actively associated with Congress since 2003, also claimed that his demand is linked to seeking respect for the families of Dalit martyrs. The Congress party has outrightly rejected the claims made by Gaurav Kumar and his wife Suchitra Devi. Questioning the timing, Congress leaders have termed these allegations as baseless and a result of not being given the position of the Haryana Congress women's president. Meanwhile, the BJP is targeting the Congress party, saying INC equals I need cash, commission and corruption. Seems rather funny. Elections were held when? 2024. And now to come up with such a thing seems rather ludicrous at this point. Why it should come up now? If there was anything, there is in the party, no one has ever expressed or shown this kind of thing, because it has not happened. This all seems to be politically motivated. I don't see any ground for such a thing. INC means I need cash, I need corruption, I need commission. Priyanka Vadra and other leaders like KC Venugopal, they must answer. Because if they are not doing defamation against them, if they are not taking legal action against them, it means there is something to hide. Dal mein kuch kala hai. This is not the first time Congress has done corruption in selling tickets. We have seen Sharda Rathor's allegation, chamdi aur damdi par ticket bechi gayi. Many other leaders have said that for the CM post you have to give 500 crores. And Congress has always done cash for job scam, cash for defense deal scams. Now it is doing cash for ticket scam. And viewers, we at times have accessed exclusive WhatsApp chats between Gaurav Kumar and senior Congress leaders, though we can't independently verify the names mentioned in the chats, but we can't ignore the level of serious charges that have been made against some of the most important members of the Congress party. And in fact, these chats contains information about exchange between Gaurav and Congress leaders. It talks about certain money being exchanged as well. Let's quickly take this across to Kritika. Kritika, while we are not putting out the names of the leaders mentioned, take our viewers through the nature of the charges that come out of these WhatsApp chats and what do they prove if they are indeed correct. Kritika. Well, what Gaurav as well as his wife Suchitra have to say now is that for years now they have been approached by the personal assistants as well as directly as well by top Congress leaders as well, demanding money in return for what they said are multiple benefits. First was the Bawal constituency seat. Second was the promise of making Suchitra the president of the Haryana Pradesh Mahila Congress. Third was also tenders that could have then gone on to Gaurav's business as well as to Suchitra Devi. So these are the few benefits that the couple are now have now listed, that these were in fact one of the benefits that were given. They were also said that they were given access to 10 Janpat, which the couple have said is the ultimate and the peak for any Congress worker as well. So now they're raising these allegations that they've been disrespected and that despite paying this huge amount of money, nothing has really come of it, and only certain other Congress leaders are always benefited, which in fact goes against the ideology of the Congress party as well. So these are tall allegations because they are being made right against the very high command of the Congress. Okay, thanks so much for joining us, Kritika, with that quick update. In fact, we're being joined now by Gaurav Kumar and his wife Suchitra Devi, who is of course the Haryana Mahila Congress General Secretary. My first question is that you've said that you were given false hope कि पैसा लिया गया था आपसे लेकिन benefit नहीं दिया गया. Who's behind asking you for all this cash and what was the mode of transaction? How were you planning on substantiating these claims? मैं सुचित्रा देवी बतौर प्रदेश महासचिव हरियाणा महिला कांग्रेस बोल रही हूँ. मैंने अपना पद आज क्यों बोला है? क्योंकि मुझे 13 दिन हो गए हैं मैंने इस्तीफा दे दिया है. अभी तक मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है. मैंने इस इस्तीफे को, इस रेजिग्नेशन को प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी,
हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं जो बीके हरिप्रसाद जी, केसी वेणुगोपाल जी, हरियाणा के अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र जी, और महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका लांबा जी, मैंने उनको अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है, बट अभी तक उन्होंने किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं करा, और ना ही मेरे पास कोई फोन आया या किसी के बिहाफ पे किसी ने बोला कि ये चीजें क्यों हो रही, आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक दलित समाज से आती हूँ, मैं शहीद की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने 2003 में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे देश के लिए। आई वॉज इन द 6th स्टैंडर्ड ओनली दैट टाइम। मेरा परिवार 56 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने के नाते और इतने लंबे समय से जुड़े होने के नाते हमारे बहुत से दिग्गज नेताओं के साथ हमेशा अच्छे घरेलू संबंध रहे हैं, चाहे वो मोतीलाल वोहरा जी हुए, चाहे वो अहमद पटेल जी हुए, चाहे किशोरी लाल शर्मा जी हुए या कोडिकुनिल सुरेश जी हुए। लेकिन पिछले कुछ सालों से हाईकमान कह दें या शीर्ष नेतृत्व कह दें, वो कार्यकर्ताओं को धोखा दे रहे हैं। दे आर ब्लफिंग द वर्कर्स ऑफ कांग्रेस। मतलब हमने कई करोड़ रुपए दिए, बहुत हमने एक ह्यूज अमाउंट उनको दिया। किस लिए? अच्छा, दिया किस किस को है? के सुरेश जी को दिया है, केसी वेणुगोपाल जी के जो पीए हैं अनस हैं, उनके थ्रू हमने केसी जी के पास पैसे गए हैं। प्रियंका गांधी जी का जो पीए हैं शादाब खान, उसने 10 जनपथ में पैसे लिए हैं। बकायदा उन्होंने अपनी गाड़ी भेजकर, यूपी नंबर की गाड़ी भेजकर बुलाया 10 जनपथ में, और कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, बैकडोर एंट्री। तो वहां उन्होंने बुलाया और कैश कलेक्ट किया। एंड सोनिया गांधी जी के पीए महेश कुमार ने हमारे घर आकर हमसे पैसे लिए। अच्छा, क्यों लिए? हमसे ये बोला गया था कि बावल जो है वो लीस्ट विनेबल सीट है, एंड मैं बावल की बेटी हूं, बावल से बिलोंग करती हूं, और हमें बावल की विधानसभा की टिकट के लिए झूठा आश्वासन दिया गया। Now, Gaurav, this is a very big allegation. The बावल कॉन्स्टिट्यूंसी टिकट, आपने कहा है कि व्हाट्सएप चैट से ये प्रूव होते हैं, तो कौन लोग हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया आपको? क्या एग्जैक्ट अमाउंट है जो एक्सचेंज किया गया? फर्स्टली, जैसे सुचित्रा जी ने बताया कि 56 ईयर से हम जुड़े हुए हैं पार्टी से, 21 ईयर्स तो मुझे हो गए। और माधवन जी एक बात बोलते थे हमेशा सोनिया जी के पीए कि गौरव जी हम तो हुकुम के गुलाम हैं। अब वो नहीं रहे, तो गुलाम वो लोग हैं जो उनका स्टाफ है, बट एक वर्कर, एक दलित परिवार का, शहीद परिवार का वर्कर, वो गुलाम नहीं है उनका। दूसरा, जो अमाउंट की आप बात कर रहे हैं, ये कोडिकुनिल सुरेश जी के सैलरी अकाउंट, जो पार्लियामेंट सैलरी अकाउंट है, उसमें गया है, उनके बेटे के अकाउंट में गया है, उनके पीए के अकाउंट में गया है। व्हाट्सएप चैट विद प्रूफ है मेरे पास। और प्रियंका गांधी जी के पीए हैं शादाब खान जी, वो खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से कि प्रियंका जी 100-200 करोड़ रुपए तो साउथ इंडियन कॉन्ट्रैक्टर से ले लेती हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और दोबारा उनसे मिलती भी नहीं है, इवन इन राइटिंग। और सोनिया गांधी जी के आप ये लगाइए पीए हैं महेश जी, उनको मैं 10 जनपद के अंदर पैसे देके आया हूँ। शादाब को मैं 10 जनपद के अंदर पैसे देके आया हूँ। और फर्स्टली क्वेश्चन उठता है कि आप जाते कैसे थे? मैं वो इंसान हूं जो रात को 12 बजे भी 10 जनपद में विदाउट एनी प्रायर अपॉइंटमेंट जा सकता था टिल नाउ। उसके अलावा महेश जी हमारे घर पे आए, जब भी पैसे दिए। केसी वेणुगोपाल जी को पैसे दिए उनके पे अनस के थ्रू। अनस ने भी लमसम, पहले लोग चेक करते हैं कि ये पैसे देते हैं कार्यकर्ता या नहीं देते हैं, तो एक लमसम सा अमाउंट ले लेते हैं, 10-15 लाख अपने अकाउंट में ले लिया, तो फिर देन इंट्रोड्यूस करवा दिया आगे अपने लीडर से। तो मेरे सामने उन्होंने बैग जो मैं लेके गया था उनको दिया। और फादर मेरे पीसीएस ऑफिसर थे हरियाणा में ही, फैमिली अच्छी रही हुई है, कुछ बिजनेस भी अपना अच्छा है, कुछ हमारा पैसा है, कुछ मार्केट का भी रोटेशन का है, जो हम पे इंटरेस्ट भी लग रहा है। तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और राहुल गांधी जी को मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। अगेन, मैं राहुल गांधी जी को खुली चुनौती दे रहा हूं इन फ्रंट ऑफ मीडिया और विदाउट मीडिया। वो कहते हैं उनका माइक बंद हो जाता है, मीडिया का माइक बंद नहीं होगा। उनके घर पे चलते हैं, उनके घर के बाहर बैठते हैं, उनके घर के ड्राइंग रूम में बैठते हैं। पहले भी मैं गया हुआ हूं 10 जनपद में, जहां वो कहेंगे वहां बैठते हैं, और वो मेरे 2-3 क्वेश्चन का आंसर दे दे। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो गांधी फैमिली, प्रियंका गांधी जी से मेरी वाइफ 1.5 साल से टाइम मांग रही है, उनको हर एक पॉइंट का पता है, फिर भी वो अपने पीए को हटा देती है।
अभी सुनने में आ रहा है कि केसी वेणुगोपाल जी ने अनस को हटा दिया, अपने पीए को हटा दिया, जैसे मैंने एलिगेशन स्टार्ट किया। इट्स नॉट द एलिगेशन कि हम ये आरोप नहीं लगा रहे, ये सत्य है। आरोप लगाते हैं, आरोप झूठे भी हो सकते हैं। मेरी हर शब्द का, हर बात का एक प्रूफ है। जो बोलेगा मैं उसको दिखाऊंगा। और क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द टोटल अमाउंट जो उसमें इन्वॉल्व है, जो दिया गया था? फॉर द टिकट अप्रोक्सीमेट 4 CR किया है, एंड ओवरऑल जो उनके खुश करने के लिए, उनको कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए ओवरऑल 7 CR प्लस दिया है, जो मार्क ओवरऑल 7 CR प्लस। लेकिन क्या आपने कहा है कि पीएस को अप्रोच किया गया था और पीएस ने आपको अप्रोच किया पहले, क्या आप कॉन्फिडेंट है कि पूरी हाईकमांड को ये जानकारी थी कि ये सब हो रहा है? डिड यू रीच आउट टू देम जब ये पैसे उनसे आपसे लिए जा रहे थे? नहीं, मैंने रीच आउट किया था मैं बोल रहा हूँ ना, फ्रॉम लास्ट 1.5 years मेरी वाइफ सुचित्रा जी उनसे अपॉइंटमेंट मांग रही है। उनके ऑफिस से फोन भी आया था, कभी दीदी जी का डॉगी बीमार है, कभी दीदी जी शिमला चले गए, कभी दीदी जी वायनाड चले गए। वो सारे मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स है। दीदी जी ने बोला है गौरव जी को 2-3 दिन में बुला लेंगे, दीदी जी ने ये बोला है, दीदी जी ने वो बोला है, हम तो क्या कर सकते हैं। और स्पेशली सदाब खान के लिए उसको आई थिंक निकाल दिया या है वो स्टाफ में, मुझे नहीं पता जी। और उनको अवेयर है। आप देखिए, ये मेरा ड्राइंग रूम है, मेरा घर है, मेरे से बिना पूछे कोई एंट्री ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। जब 10 जनपद पे Z++ सिक्योरिटी है, कोई भी, आप मुझे छोड़िए, मुख्यमंत्री भी किसी स्टेट का उसके अंदर बिना उनके अपॉइंटमेंट के एंट्री करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा जी। और आपको कब लगा कि ये सारे पूरे मामले को लेके आपको सबूत, एविडेंस डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, इसको इकट्ठा करना चाहिए? एक्चुअली मुझे प्रियंका जी के स्टाफ से ही एक फोन आया था। वो मेरे वेल नोन है। उन्होंने मुझे बोला था कि प्रियंका जी ने बोला है मुझे अपने स्टाफ के अगेंस्ट प्रूफ चाहिए। मैंने आपको अभी जो रिकॉर्डिंग सुनाई है, ये प्रियंका जी के कहने पर फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्डिंग बनाई थी, और वो रिकॉर्डिंग मैंने उनको भेजी है, और प्रियंका जी ने उनको सुना है और अपने स्टाफ को निकाल दिया। बट पीए को निकालने से आपकी अपना करप्शन बंद नहीं होता। अगर पीए ने बोल दिया कि आप 200 करोड़ रुपए ले लेते हो, भैया वो तो माध्यम है, वो एक सैलरी एम्प्लॉय है। वो कितना कमा लेता होगा साल का? 1 करोड़ 50 लाख, जो भी XYZ इतना कमा लेता होगा, आपका नाम लेके आपके माध्यम से कमा लेता होगा। लेकिन असली तो कल्प्रिट आप कहो, असली जो करप्शन है वो तो आप लोग कर रहे हो। उसको निकाल दिया, क्या कल अगले पीए को निकाल देंगे? राहुल गांधी तो कठपुतली बन चुका है। उनका एक पीए है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके 2 पीए एक्चुअली, कौशल विद्यार्थी जी और अलंकार जी। तो एक पीए का वो कठपुतली, वो कहते हैं ना, पीए ने डमरू बजाया, डांस करो, राहुल जी डांस करना शुरू कर देते हैं। उसको तो उसके आगे दिखता ही नहीं है। उसने शदाब ने ही मेरे को बताया था, मेरे सामने कॉल किया एक मुख्यमंत्री को, एट दैट टाइम ही वाज द CM ऑफ दैट स्टेट। तो उसने बोला सर आप मिल लिए राहुल जी से? बोले नहीं यार, कौशल मिलवा नहीं पाया। बोले सर क्यों नहीं मिलवा पाए? बोले यार उसकी चल रही है ना दूसरे वाले की। जब एक मुख्यमंत्री आपसे 3 दिन दिल्ली में रुककर नहीं मिल पाता बिना आपके पीए के पूछे, और पीए की डिमांड होती है करोड़ों, तो पीए की डिमांड पूरी करें, कार्यकर्ता अपना परिवार देखे, या फिर आपकी डिमांड पूरी करें। All right, so that's Gaurav Kumar as well as Suchitra who are joining us, and they are making these very, very serious allegations of corruption within the Congress party. Top leaders' names and their PAs who they are alleging are responsible for this. Thanks so much for speaking to us. Let's quickly open this up and take it across to our guest. With us is Rajiv Jaitley, spokesperson of the BJP. Advocate Kapil Madan is also with us. He's a political analyst. Kapil Madan, what do you make of these charges? Very sensational, certainly. And it's not 1 or 2, but multiple leaders and their PAs who they have been providing money to in exchange for a ticket. Crores of rupees have been paid is the allegation. Madhav, let me just, say one thing here. So, this is a classic ticket, denied allegation. We've seen, number of elections, you will see these kind of people making allegation, which, I will just ask one question here. If he was wronged, why did he chose to wait for 1.5 years before he made this allegation public? Now, the point I want to stress here is that this is a predictable pattern that your ticket, you don't get a ticket, or you don't get a desired ticket which you were asking for. Anger follows, and you have these kind of, allegations that get surfaced. At this time also, we've seen in the past that how politicians, MLA, MPs, etc. from the opposition
they were also facing grave allegations at the behest of the incumbent government, that's the BJP. And they crossed line, and after that, all those cases got shut. Closures were filed, they were given clean sheets, etc. So what I am trying to highlight here is that you can't rule out a political sabotage, you can't rule out a political controversy with a clear aim of causing defamation, because we all know at this point in time that the ruling government has much to answer, especially the way US is treating us, especially this trade deal that we had with the United States, and the allegations or the statements which are being made at the regular interval by the United States. So I don't rule out the possibility. Kapil Madan, we will put that question to the BJP spokesperson. There's some technical issue we can't get through to Rajiv Jaitley. But let me ask you this. All right, Rajiv Jaitley is with us, I'm told now. Rajiv Jaitley, is timing पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब क्यों 1.5 साल बाद क्यों रुके थे 1.5 साल तक? Why are they now coming out and speaking? क्या ये पॉलिटिकल सैबोटाज नहीं हो सकता? ये सवाल उठाया जा रहा है. जवाब दीजिए. Rajiv Jaitley, can you hear me? I think we've lost that line there with him once again. But Kapil Madan, simple question is this. Is it possible to answer or to at least take forward the point that you made of why he was waiting for 1.5 years, the couple was waiting for 1.5 years? Is it possible that they were trying to gather the evidence in the form of these WhatsApp chats which clearly mention the payment of money? Madhav, again, this explanation is even worse than the allegation, because you don't manufacture evidence. Once you are making an allegation, you make allegation basis the evidence that you already have. Now, what is the allegation? Let's assume what is his best case. He says that someone sought money in exchange of tickets, and he has WhatsApp chats, etc., which can substantiate that. You can't take 1.5 years to gather this evidence. This evidence is available with you, if at all you have. If you are manufacturing, then of course, yes, you will have to do certain manipulations, forgery, some AI distortions, collecting etc. evidence is I'm not into that. How is collecting evidence a manufacturing of evidence? If he's having conversations with leaders, again, I'm not saying that is. I'm not saying this is foolproof. I have no way to independently verify this. This is just what is being claimed by the individual concerned. But if he's having a conversation with senior leaders, I mean, unless there's proof to the contrary that it's manufactured, then what is the objection there? Yes. Let me explain for the benefit of our viewers, Madhav. If I am having a conversation with someone through WhatsApp, etc., and basis this, I am saying that I am wronged, right? So evidence is available with me right now when the incident has happened. You will not take 1.5 years to bring the evidence which you already have, which is available at the click of a button in your own phone, if at all you have. But if you don't have the evidence, and if you want to, make a shot in the air, and then you have to do a reverse engineering and you have to connect dots. Look, okay, Rajiv Jaitley is with us now. Rajiv Jaitley, so that requires. Rajiv Jaitley, क्या ये evidence manufactured है? क्या ये WhatsApp chats genuine है कि नहीं है जो ये couple cite कर रही है? All right, I think we've again lost that line. I apologize for that poor connection. But Kapil Madan, the question is, and the question that Congress party will have to answer, the BJP says it's not happening for the first time. Such allegations of ticket distribution, whether you choose to call it disgruntlement, so on and so forth, the point is that such charges have been made in the past in multiple cases when it comes to the Congress party. So, Madhav, forget here he's an individual. We have CBI and Private Investigating Agency filing thousands of pages in the charge sheet, and when this goes to the court says that this is not even worth taking cognizance. Court ne abhi as recently in Arvind Kejriwal's case have said that this is not even a fit case to frame charge against the accused persons. No, I mean, making an allegation in there, I mean, it's a free country. We have free speech. We have Article 19. Everyone is free and willing to make any kind of statements, which he seems like he can make those statements. But the kind of statements he's made, the timing of the statement, the fact that he is a disgruntled aspirant who could not get a desired ticket. He waits for 1.5 years. I'll just ask one question. I'll just ask one very important question here, Madhav. If he was so deserving candidate, okay, and despite that, if he were indulging in this kind of activities, I am not saying whether whatever he's saying, I'm saying assume for a minute whatever he's saying is correct. Don't you think so
first he has to answer about himself. Why he was constrained to purchase tickets? Why did he involve money into it? No, but Kapil Madan, of course, he may be guilty of whatever, but if he's being pressured to pay money, he is saying the PAs of these senior leaders are calling me to pay money. And I had no other option but to do so to get a ticket. No, so Madhav, he could have fought independently. If he was a deserving candidate, he could have fought independently. Why would someone will pay? Will he be able to prove the charges, and is this an embarrassment for the Congress party remains a question, because these are questions that are out there in the public domain. I'm told that we are finally joined by Rajiv Jaitley. Rajiv Jaitley, क्या ये इतनी देर क्यों लगी इस तरह के allegations करने में? अगर 1.5 साल लगा है तो टाइमिंग पर सवाल उठता है, and this is clear proof that he is disgruntled because he did not get a ticket. जवाब दीजिए. No. Earlier, we BJP used to make these cases. But Congress itself is exposing Congress family. And this is the Congress party, you have seen that during their election campaigns also. They were claiming that we can give these numbers of jobs. I mean, how can they give jobs? We have selection committee, we have board. So they started claiming that once we win this election, we are going to give job to the youths. So this is a Congress party's parchi kharchi system and a model of loot by the Gandhi family. And this is not the first time. Prior to this also, if you look back, in somewhere around 2019, their own candidate from Faridabad, Ballabgarh, Sharda Rathore, she said that I have been asked for the money and for inappropriate, services. She claimed that. This is not the first time that Congress workers are claiming that Congress party. But the surprising stuff is this, that when people are not with Congress, still they are demanding 7 crore rupees when they are nowhere in the country. Where their existence is almost zero now. So that's very surprising that people are thinking that Rahul Gandhi, maybe some people, those who really follow Rahul Gandhi ji, they are thinking that Rahul Gandhi is working for us. Okay. They were not aware. They are not with their Let's leave it candidates there. also. Very, very sensational charges indeed. Of course, what's the truth of the matter? Perhaps only an investigation can tell. We're told that they've approached the police and filed an official complaint. What will happen in this matter remains to be seen. But Rajiv Jaitley, Advocate Kapil Madan, I'd like to thank both of you for joining us this evening.